Hello everyone. Today I'm going to talk about the drug hypersensitivity and idiosyncrasy reactions. Uh, Drug hypersensitivity और idiosyncrasy reactions क्या होते हैं? Drugs in respect with drugs and medications. पहले we have to understand about the drug hypersensitivity. पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि hypersensitivity क्या चीज़ है, खासकर drug hypersensitivity. Hypersensitivity is an immune-mediated reaction to a drug. इसकी symptoms क्या है? It's from mild to severe and include rash, anaphylaxis, serum sickness, breathing difficulties, abdominal cramps, and diagnosis. You can see इधर आप देख सकते हैं कि अगर बाज़ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो immunological reactions जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट मेडिसिन लेते उसकी बॉडी पे ये इस किस्म के जो हाइव्स या फीवर और रेश जो हैं ये अपीयर हो जाते हैं, और ये इनको हम ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। और इसकी ये है कि ये माइल्ड भी हो सकती हैं और सीवियर भी हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ इस तरह ड्रग के साथ एसोसिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैं, हम उसको इस किस्म के जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं इसको एलर्जिक रिएक्शंस भी कहते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। ये भी हैं, these are the various symptoms that may be associated with the drug hypersensitivity and allergic reactions: rash, itching, difficulty in breathing, abdominal cramps, vomiting. अक्सर आप लोगों ने ज़्यादातर ये देखा होगा कि मेडिसिन हम लेते तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो वो अक्सर अपीयर हो जाते हैं वोमिटिंग की शक्ल में या हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को कहा था कि ड्रग्स खासकर अपनी जो उसकी दो किस्म की इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स इफ़ेक्ट्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स, और दूसरे उसके सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। प्राइमरी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो ड्रग की जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जिसके लिए हम ड्रग लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं? वो प्राइमरी इफ़ेक्ट्स या प्राइमरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज या सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अदर देन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज जितने भी आते हैं, खासकर ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस, ड्रग एडवर्स ड्रग इवेंट्स, ये सारे सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज में आते हैं। और इसके साथ ये क्या है? ये इसकी सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स, और ये उसकी जो बेसिक वजह क्या है? प्राइमरी इफ़ेक्ट, it is, as I have mentioned, that drug binds with the receptor for pharmacological actions. It must bind with the receptor to produce responses. Whenever it attaches to specific to primary effect for primary receptors, we term that this is a primary effect where they will have their therapeutic effects. But whenever it binds to certain other receptors like secondary receptors, so the effects may be appear in the form of ADRs or hypersensitivity reactions or other things. Now, इसकी जो diagnosis है, diagnosis is clinical. Mostly we are doing the अक्सर क्या कहते हैं, स्किन टेस्टिंग कहते हैं, occasionally useful, या पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपको इस ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, तो आपसे हिस्ट्री भी बताते हैं। लेकिन जो रैपिड टेस्ट होते हैं वो हम स्किन टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको बाद में उसका later on we can discuss the skin testing and how we can do that. Little more, if go little more in details. So जो ड्रग एसोसिएटेड ये एक लेंसेट में 2019 में ये स्टडीज जो है कि रिव्यू आर्टिकल था, उससे मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो खासकर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, अब ड्रग में हम स्पेसिफिकली आते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। मोस्टली जो अक्सर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं वो अक्सर एंटीबायोटिक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो उसमें एक होते हैं ऑन टारगेट एडीआरस, दूसरे होते हैं ऑफ टारगेट एडीआरस।
आप लोगों ने ये देखा होगा, एक होते हैं ऑन टारगेट एरियाज, एक होते हैं ऑफ टारगेट एरियाज। एंड ये ऑन टारगेट एरियाज क्या होते हैं? जब व्हेनेवर एंटीबायोटिक एंड माइक्रोबायोम, द खासकर जो माइक्रोबायोटा है आपकी, जो एंटीबायोटिक डायरिया जो जेटी में जो होते हैं, अक्सर उसके एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया और एंटीबायोटिक कोलाइटिस इट में अपीयर। तो इसकी जो एडीआर मैकेनिज्म है वो यही पे है कि एक माइक्रोबायोम है उसके साथ क्या होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं, the ADR phenotype are examples appear in the form of what? Pseudomembranous colitis, associated pseudomembranous colitis, RNTs को हम antibiotic associated colitis भी कहते हैं। And these are the predictable based on a drug action. So mostly this is on target ADRs. इसी तरह जो ऑफ टारगेट एडीआरस होते हैं उसमें फिर दो किस्म के होते हैं। एक नॉन इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी एचएसआरएस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, और एक होते हैं इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एक होते हैं जो इम्यूनोलॉजी, एक नॉन इम्यूनोलॉजिकली। जो इम्यूनोलॉजिकल सेलुलर टॉक्सिसिटी एंड डिस्टर्ब फिजियोलॉजी, नॉन इम्यून सेल रिसेप्टर इंटरेक्शंस हैं आपका। अगर एंटीबायोटिक यहाँ पे जो अटैच होते हैं तो ये इसकी जो फिनोमेना है, खासकर एंडोसोम, लाइसोसोम, इमेटिलिन, एजिकुलिन प्रोटीन के साथ ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मोस्टली blocks the protein binding folding of ER, and ER goes into the ER stresses, and फिर क्या होता है, mostly the things may go into uh, it may the apoptosis, it may be like with the calcium level increase अगर हो जाते हैं तो कैस phase 12/4 के में जो वो effects होते हैं, तो it can be appear, ये भी एक receptors हैं, तो ATPs level down will increase injected oxygen species or inflammation symptom may appear in the form of। ये एंटीबायोटिक खास इसकी जो एग्जाम्पल है वो है aminoglycoside acute tubular necrosis। Aminoglycoside also have a nephrotoxic as well as the phototoxic. They may appear like one of these. Similarly, अगर आप लोगों ने ये भी receptors हैं और non IgE mediated, एक तो antibiotic non IgE mast cells activation, तो इसमें quinolones खासकर if it binds with this, and ये जो mechanism है, ये जो receptors हैं, various receptors can increase the calcium inside that calcium inside increases, and they may cause degranulation. And the fluoroquinolones, degranulation of the various lysosomal hyper जो mast cells से जो mediators है, local mediator bradykinin system टिश्यू में वो calcium अगर increase होता है inside so degranulation cause करते हैं, and they may appear in the form of urticaria। तो आप लोगों ने फ्लोरोक्विनोलोन्स का बाद जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उसमें अक्सर urticaria उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसी तरह जो इम्यूनोलॉजी की मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें एक एंटीबॉडी मेडिएटेड, तो अक्सर एंटीबॉडी रिएक्शंस डिग्रेनुलेशन होते हैं, and these degranulation may appear in mast cells whenever the antigen binds with the receptors with these antibodies। So ये क्या एक stimulus, this may really this give some stimulus to release the stored local mediators in the form of histamines, bradykinin, prostaglandins, etc. They may be whenever the antigen antibody reaction occurs, so they may be released degranulation matter, and the local mediator may release surrounding surrounding tissues, and it appears in the form of penicillin angioedema, local so penicillin have a hypersensitivity to angioedema. So this is the science symptom of that. Similar T cell receptor membranes, this is the T cell receptors, and the peptides, especially it is associated with the ABEC hypersensitivity reaction. Whenever it attached here, antigen presenting cell membranes, they may cause this kind of hypersensitivity reaction. It may appear in the form of hypersensitivity, like this kind of fishes this may appears. So
this is just like a general phenomena that is associated hypersensitivity reactions associated with the use of antibiotic. You can read this article from the Lancet 2019. It's a very informative article, so you can get more information about the hypersensitivity reaction associated with antibiotics. Okay, so there is another topic. I have to discuss, like as I mentioned, कि अगर हम उसकी जो इन विवो एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, तो ये अक्सर जो ड्रग एपीक्यूटेनियस और ये क्या अक्सर एक these are the IgE mediated basically master जो eosinophils हैं, उससे जो mediated IgE mediated hypersensitivity reaction जो skin test है वो अक्सर इस तरह करते हैं. या टीसी अगर आप लोग कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो फिर वो स्किन टेस्ट करवाते हैं कि यू आर एलर्जिक टू दिस ड्रग्स और नॉट. सो सर खासकर जो कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स वगैरह होते हैं, अगर मेडिसिनल क्रीम्स और क्रीम्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम एक हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट करते हैं. तो आपने अगर इस तरह ये भी होते हैं, किस तरह अपियर होते हैं कि आपकी जो ड्रग है हिस्टामिन पॉजिटिव कंट्रोल, सेलाइन इज नॉर्मल नेगेटिव कंट्रोल, और ये ड्रग है, और अगर 15 मिनट के लिए रखते हैं तो दिस काइंड्स ऑफ सिम्टम्स में अपीयर है. और जो लेट्स इसी तरह up 15 minutes, you can keep these things for 15 minutes again. Or if there are histamine here, it clearly shows this kind of urticaria or rash. Like, and here we didn't find any nervous alliance, negative control, that's a negative control. So there is no signs and symptoms. Intradermal एक तो subcutaneous है, ये upon the cutaneous skin है. एक है आप उसमें थोड़ा उसकी स्क्रैचेस करते हैं या उसको कट्स लगाते हैं माइनर, फिर आप उसमें स्टेमिन और सलाइन, it can be appeared that you can see the differences here after 15 minutes. So this is the intradermal, it can be seen like here, and it's an appearance of the tested drugs. Similarly, अगर हम T cell mediated जो immunity है, जो T cell IgE mediated T cell mentioned, तो अगर आप इसकी सी पैच लगाते हैं तो ये नेगेटिव कंट्रोल है आपका, which will appear like here. This is the negative control, right? While this is the in place for 48 hours, this is the paged. Page अगर वो आप लगते हैं तो the allergic reactions can appear like this one. This is the allergic reactions, the allergic signs of page like this. So again, अगर आप इसमें कोई पेट्रोलियम केमिकल वगैरह है, सेफालोक्सीन, एम्पिसिलिन, एम्फोक्सिलिन, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. तो आपकी जो allergic functions हैं आपको, this is the intradermal, this is the just a page in the dermis में लगाते हैं, epidermis and dermis region में, तो एम्पिसिलिन 25 मिलीग्राम पर है, तो अक्सर ये appear like this. So it means that is hypersensitivity, the ampicillin associated hypersensitivity. Now we have another terminal, idiosyncrasy. How we can define? So idiosyncrasy क्या है? Idiosyncrasy refers to those unfortunate reactions of drugs that occur in a small fraction of patients and have no obvious relation to dose or duration of therapy. तो इसका डोज और ड्यूरेशन थेरेपी से कोई बात, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ड्रग के स्मॉल हो, लेकिन ये ड्रग के साथ वो अपीयर हो जाते हैं, लेकिन वो स्टडीज में जो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी या स्टडीज है वो उसमें नहीं होता, लेकिन वो अपीयर हो जाती है. इसको आइडियोसिंक्रेटिक अनफॉर्चुनेट रिएक्शंस टू आइडियाज टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूसेज. और ये इनका dose या duration therapy कोई कोई, लेकिन it depends on the patient varies, maybe vary to patient to patients. और इसका जो मेन frequent target होते हैं वो liver toxicities होते हैं. और क्या इस तरह let's understand with the help of a diagram, this one.
अगर आप एक ड्रग लेते हैं and mostly अक्सर drug जो molecular size है वो बहुत low, most of the drug they have a low molecular size. They can potentiate the immunological reaction, low molecular size. They need like for immunological reactions, you have to the drug must be attached to certain haptens, the neurohaptens. It's a larger protein molecules. Whenever the drug combines to with the hapten, so it found a modified proteins are highly reactive metabolite proteins formed. So what happens? That modified proteins formed. So then we have uh, the antigen presenting cells, and similarly we also have this stressed, like if there are some bacteria, viruses, HIV or HPV, अगर ये viruses हैं, तो it is in persistent condition of stresses. So they give signals, danger signals to the antigen presenting cell and the helper T cells through a pathway signal two pathways, and the signal two pathway they can give without signal two pathway they can the immunological tolerance can be produced. While if it is like modified protein can give signal one to the cell and the T cells, they can appear in the form of they can stimulate the CD8 acid plus T cells plus B cells, and they appear in the form of immune responses. In both conditions, here CD4 the complement system may also involve, and here mostly the CD4 complement system is involved, right? So either here the CD4, CD8, and the beta cells they can give immune responses where which can give immunological tolerance. So this is a drug idiosyncrasy. This is the idiosyncrasy reactions. Now, in general perceptions, there are areas. If we look to the let's understand the concept of adverse drug events and adverse drug reactions. So, adverse drug reactions may promote, they may causes, they may be pharmacological toxicities and hypersensitivity. In terms of pharmacological toxicities and hypersensitivity. And pharmacological toxicity, the mechanism of the pharmacological effects, as I mentioned, that may be attached to certain receptors, secondary receptor, and produces their responses with respect to their affinity attachment to the secondary receptors. While whenever hypersensitivity reaction may, as I mentioned, it may causes intolerance, allergy, idiosyncrasy, and you can differentiate now these things. That and these intolerance, they may also show some pharmacological effects. Allergy may this may boost immune reactions, and they may appear in the form of allergic or pseudo-allergic reactions. Similarly, the idiosyncrasy, other mechanisms, they can allergic or pseudo-allergic reactions may appear. While in here, in pharmacological effects, they may be organ toxicities. But here, the symptoms may be organ toxicities, like the hepatocytes, hepatotoxicities, necrotoxicities may be appear. While here the allergic reactions may be appear, like I mentioned, the rashes, urticaria, dominant pains, these may appear in the form of allergic reactions. So that is just the area that is the drug, the intestinal event that are associated with that in terms of within the use of drugs. So that's all about the idiosyncrasy and hypersensitivity reactions. If you have any questions, you can drop that in the comments. You can ask in the comments. I will